Good evening, everyone. My name is Gagrani, and I teach constitutional law at Judiciary Gold, which is a product of Team LegalEdge and Toprankers. And today we're going to have the question hour quiz on the Constitution of India. Uh, I'm sure all of you, before this, you must have attended pretty much all the question hour quizzes. We've already had it, I think, on 5 subjects, and the quiz on another 4 subjects still remaining. So every day at 8:30, only the GK quiz would be at 8 o'clock. But every day, make sure that you're attending all the quizzes at 8:30 p.m., right? So I'm just waiting for more students to join before we start with the quiz. I'm pretty sure all of you know the modus operandi. That is, you have to click on the link which is given in the description, and that is how you join for the quiz. And so 25 students have joined the quiz. So once enough number of students have joined the quiz, we'll start the quiz, and the top 3 students at the end will be getting rewards. वो क्या है वो सारा के सारा दिया हुआ है anyway page पे. So, but obviously knowledge is the reward यहाँ पे. So बड़ी ज्ञान वाली बात होगी. But make sure that you click on the link and join the quiz. Let's wait for more students now. It's 35. 50 तक का वेट करते हैं. You never know, शायद हो जाए. 34. 38 students. That's wonderful. 12 more students and we'll start. तब तक बाकी लोग जो आ चुके हो कहीं मत जाना. And I hope you know how the quiz shall be played. That is, question सामने आएगा. एक चीज का ध्यान रखना, जब पिछले क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, मैं डिस्कशन के बाद I'll give a very small break of 5 to 7 seconds because there is a small lag between the YouTube and the Mentimeter platform. जिस रीजन से जब पिछले क्वेश्चन का डिस्कशन चल ही रहा होता है, उसी टाइम पर मेंटी पे क्वेश्चन आ जाता है. सो I'll give you a very small 5 से 7 सेकंड का ब्रेक, जिसमें you can quickly switch to the Menti platform and start the quiz over there. Okay? That's 50. Wonderful. 60 तक का वेट करते हैं. I'm sure 1 मिनट के अंदर probably will reach 60. So 1 मिनट और, ये दिल मांगे मोर, सिर्फ 60 seconds और, and then we'll start the quiz. Don't worry, once we start, it'll all be worth it. This extra weight will all be worth it. अबे यार 50 पर अटक गया है. कुछ लोगों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए उसको 48 कर दिया. $51, $52, so almost there. चलो, I think start करते हैं. That's still a great number to start with. So 54, okay, that's wonderful. So सामने क्वेश्चन आएगा. टाइम इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो. एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो बीच में ज्वाइन करेंगे वो रेस में शुरू से पीछे रहेंगे. So it might not make a lot of sense for them to then continue with the quiz unless if they want to know the questions. So that is why. So 53, 54 students हैं. Let's start with the quiz. Make sure कि कम टाइम के अंदर questions को आंसर करो. And then we'll have a very small discussion after each question. ठीक है? And make sure that your actual name is there. So अपना वहां पे जो मेंटी में नाम है, वो नाम सिर्फ नाम मत करना, नाम एंड सरनेम दोनों होना चाहिए और एक्चुअल नाम होना चाहिए. कुछ भी फर्जी रैंडम सा pseudonym नहीं होना चाहिए. ठीक है? So let's start. 55 students, that's good enough. Let's start with the first question. So here's the first question in front of you. Schedule 3 of the Constitution does not provide for oath of which of the following bodies? It does not provide. Maximum questions पे not पर बहुत focus करना. The last 1 second and time's up. Now, most of you are wrong. The third schedule, surprisingly, does not provide for oath of the President of India क्योंकि याद रखना President का oath Article 60 of the Constitution में दिया है. Now, Part 2 of the Constitution, which provides for emoluments, वहां पर President का emolument दिया है. But Part 3 में बाकी सब लोगों का oath दिया है, पर President का oath separately एक article में दिया है. And what's the article? It's Article 60 of the Constitution. भूलना मत.
ठीक है. So only I think 12 of you are right. Let's see. Let's check the scoreboard. The first one, rank one for now, is Nitika. Second is Vidit. Third is Akash. Not much to talk about the whole scoreboard right now. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्कोरबोर्ड और ज्यादा वैलिडेट होता जाएगा. So just make sure कि अपन अच्छे से अटेंड कर रहे हैं इसको. So let's move on to question number 2. याद रखना, Article 60 of the Constitution provides for oath of the President of India. Question number 2. Which of the following commissions or committees dealt with the local self-government? Which of the following dealt with the local self-government? Balwant Mehta Committee, Kothari Commission, Veerappa Moily Committee, and Venkatachalam Commission. बहुत सिंपल है. I'm presuming at least 90% उसको सही मार्क करेंगे. करा है. That's wonderful. The correct answer is Balwant Rai Mehta Committee. This committee was constituted in 1957. It was the first committee on Panchayati Raj. और उनके recommendations के basis पे 1959 में the first panchayat was held. Okay, so भूलना मत. 1957 Balwant Rai Mehta Committee was the first committee. इसके अलावा बाकी committees on panchayats are equally important. That is Ashok Mehta Committee 1977, GVK Rao Committee 1985, LM Singhvi Committee 1986. All of them are equally important, right? और ये भी याद रखना, पंचायत को constitutional status कौन से amendment से मिला था? 73rd and 74th. 73rd से पंचायत and the 11th schedule was added. 74th से municipalities and the 12th schedule was added. ठीक है, चलो. Let's look at the scoreboard now. Do we have a new leader? Probably yes. So Ajay, who was the fastest on question number 2, is now the new leader. Meenakshi at number 2, Akash at number 3, Nitika number 1 से number 4 पर पहुंच गई है, Pooja at number 5. ठीक है? Let's look at the new question now. चलो, question number 3, back to your Menti app. Question number 3, as I said, I'm waiting for 5 seconds. So that आप तब तक वहां पे पहुंच जाओ. Start. What was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? What was the basis for constituting Constituent Assembly? किसके बेस पे बना था? Was it a resolution of the INC? Was it the Cabinet Mission Plan? Was it the Indian Independence Act 1947? Or resolutions by the state legislature? Most of you are correct. That is obviously the Cabinet Mission Plan of 1946, जो क्लेमेंट एटली ने तैयार करवाया था. was a British Prime Minister उस टाइम के, and he sent a cabinet mission to India which had 3 of the most important of the cabinet members. और उन्होंने फिर इंडिया में आके इलेक्शंस करवाए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स को इलेक्ट किया था. दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. भूलना मत. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट. लेट्स लुक एट द स्कोरबोर्ड नाउ. एनी चेंज? We have Nitika again at number 2. Ajay is still leading at number 1, but the gap is obviously very less. This gap might increase with the subsequent questions. But chalo, all the best, everyone. Buck up. Ajay is at number 1. Yes. Chalo. Let's look at the next question now. That is question number 4. Achha, by the way, just a small surprise. आज number of questions हमने थोड़े से बढ़ा दिए हैं. So number of questions are not 25, but they are 30. So quiz थोड़ा सा लंबा चलेगा, but I hope that's fine with everyone. Question number 4. Which of the following is not one of the categorizations of DPSPs? Directive Principles of State Policies का इनमें से कौन सा categorization नहीं है? Quick, just the last 8 seconds. Last 8 seconds. यार ये गलती कैसे कर सकते हो? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स इज वन ऑफ द कैटेगराइजेशन. सो गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, डीपीएसपी ये 3 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एंड देयर आर सर्टेन डीपीएसपीज जो इन तीनों में से कोई ना कोई कैटेगरी, इनफैक्ट ऑल द डीपीएसपीज कैन बी कैटेगराइज्ड ईदर एज गांधीयन और एज सोशलिस्टिक और एज लिबरल इंटेलेक्चुअल. बट प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल जैसा कुछ भी नहीं होता है. वी कैन जेनेरिकली कॉल देम प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स, बट एज सच कोई नॉन कैटेगराइजेशन में प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल्स नहीं है. That is why that's a wrong answer. और अपन ने वैसे भी नॉट पूछा था, which of the following is नहीं पूछा था. ठीक है,
सो आई एम श्योर लीडर बोर्ड में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। आकाश ने इस बार गड़बड़ करी, इसलिए आकाश है नंबर 4 की जगह नंबर 6 पे। नितिका इज एट नंबर 1, अजय नंबर 3 पर आ गया, मीनाक्षी एट नंबर 2, Shireen I think has made an entry, is also 1122977. I don't know if you can rename yourself or not, but if you can, please do that. But Nitika is right now at number 1. But the gap, as usual, is pretty less between 1, 2, and 3. So, guys, but 3 के बाद फिर gap बहुत बड़ा हो जाता है. So, बाकी 7 also, buck up, everyone buck up, and top 3, make sure that you guys, keep your lead. ठीक है? चल, आगे बढ़ते हैं. Let's look at question number 5, I guess. Yes. ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, sixth schedule, it's again a question on schedule. The sixth schedule of the Constitution of India does not provide for administration of the tribal areas of which of the following states? So sixth schedule कैटेगराइजेशन की बात करता है ऑफ ट्राइबल एरियाज, जिसकी फिफ्थ शेड्यूल की बात करता है, बट सिक्स शेड्यूल सिर्फ 4 स्टेट्स की बात करता है। इन 4 में से कौन सा वो स्टेट नहीं है? यस, इट्स मणिपुर। याद रखना, सिक्स शेड्यूल ATMM, ATMM, दैट्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं आता है, मणिपुर लोग एम से कंफ्यूज कर लेते हैं, बट मणिपुर नहीं आता है। सो इट्स असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, डोंट फॉरगेट। मणिपुर इज द राइट आंसर बिकॉज मणिपुर उन 4 स्टेट्स में नहीं आता। लेट्स सी क्या डिफरेंस पड़ा। टॉप 3 तीनों ने गड़बड़ करी है और नीचे वाले ऊपर आ चुके हैं। उसके चक्कर में शांतनु इज एट नंबर 1 एंड द गैप व्हिच इज अ ह्यूज गैप जिसके बारे में बात कर रहा था इन द लास्ट क्वेश्चन, वो गैप अब भर गया है। एवरीवन इज एट 3000 which is a great place to be. So top 10 बहुत क्लोज हो गया है। Buck up. Timing is equally important as marking the correct answer, as with the actual examination also. ठीक है, चलो let's look at question number 6 now. Question number 6, start. तीन टाइप के बिल्स, इन तीनों में कॉमन क्या है? The Dowry Prohibition Bill, the Banking Service Commission Bill, and the Prevention of Terrorism Bill. What is common between all three of them? Quick, last 3 seconds. Now these three are the only bills to have been passed. एक और बिल था 2009 में जो इंट्रोड्यूस तो हुआ था पर पास नहीं हुआ था. These three are the only bills to have been passed by joint session of the Parliament, which is allowed under Article 108 of the Constitution. Now, the first one, the Dowry Prohibition, it was on 6th and 9th May 1961. The second one was on 16th May 1978, and third one was on 26th March 2002. ये 3 बिल्स थे और ये तीनों ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से पास हुए हैं। ठीक है, तो और ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भूलना मत। कौन बुलाता है ज्वाइंट सेशन? प्रेसिडेंट। प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कुछ भी मत भूलना इसमें से प्लीज। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द स्कोर बोर्ड नाउ। We have Nitika again at number 1 and Ronak at number 2, Meenakshi at number 3. Pretty much half of the leaderboard is at 4000s. So again, the gap is very less. Hitesh at number 10, Chandru number 9, Suri number 8, Shireen at number 6, I guess. Chalo, bug up. Let's question now. छोटा सा ब्रेक के बाद स्टार्ट करूंगा। चलो, the number has crossed 60. That's wonderful. That's more competition. Question number 7 आ गया सामने। Fixation of quotas in unaided professional education institutions, कौन सा था? ये 4 में से It was a PA नामदार केस। It was a PA नामदार केस जहां पे कोटास को मना कर दिया था देने से, एंड द इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट उसको कम करने को बोला था इन द प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सो इट वाज अ PA नामदार केस।
which most of you have marked correctly. Let's see if there's any change in the leaderboard. Probably there might be. Ajay, who's doing very well, but now he's at number 10. Still doing very well. Start low number 10 is not a bad place to be, but it's not amongst the top few. Nitika is doing consistently well. Ronak at number 2, Meenakshi at number 3. That is how it is right now. Chalo. Let's move on to the next question. Question number 8. Quickly, everyone come to Menti. Chalo, most of you are here already. Question number 8. The decision of Supreme Court in which case led to the abolishment of the titles of privileges of India's erstwhile princely rulers. इसके चक्कर में टाइटल्स अबॉलिश हो गए थे. कौन सा केस था वो? इट वाज ऑब्वियसली नाम से भी समझ में आ जाना चाहिए था यार. दैट्स माधवराव सिंधिया केस. वो केस तो इवन दो माधवराव सिंधिया एंड द अदर प्रिंसली स्टेट्स जीत गए थे जब 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 प्रिवी पर्स को अबॉलिश कर दिया था, पर उसके बाद से एक अमेंडमेंट पास करा. वो अमेंडमेंट आगे क्वेश्चन में भी आने वाला है, इसलिए मैं अभी से नहीं बता रहा हूं, पर मैंने हिंट दे चुका है. एक अमेंडमेंट पास करा और उस अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था. एंड उसके बाद ऑब्वियसली अगर वो प्रिंसली स्टेट्स ही नहीं रह गए तो प्रिवी पर्स ऐसी कोई बात ही नहीं है. एंड प्रिवी पर्स वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड बिकॉज शी वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर सोशलिस्ट गवर्नमेंट इन द कंट्री, अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. और ऐसे टाइम पर एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी में प्रिवी पर्स ऐसी कोई चीज का कोई भी महत्व नहीं होता है. दैट इज व्हाट हर क्लेम वाज. सो दैट इज व्हाई द प्रिवी पर्स वॉर was abolished by the Indira Gandhi government, even though it was promised by her father itself, that is Pandit Jawaharlal Nehru. And it was initially said that privy purse will be permanent in nature. ये आपसे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता है. But that's not how it worked. 20 साल के अंदर उनको छीन लिया गया. ठीक है, चलो लीडर बोर्ड. Any change? Yes, Akash at number 10. Nitika still ruling at number 1. But the gap between 1 and 2 is as low as 16 points now. And the gap between 2 and 3 is barely 28 points now. So it's only a matter of few seconds. And Shirin is at number 4, doing wonderfully well. And 1122,977 is also doing consistently well. और बाकी लोग जल्दी आओ टॉप 10 में. अच्छा guys, we are having this quiz every day. डेली बहुत काम की वीडियोस लेके आ रहे हैं फॉर जुडिशरी एस्पिरेंट्स. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू द जुडिशरी गोल्ड चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी वीडियो आता है यू आर द फर्स्ट वंस टू बी इन्फॉर्म्ड. कोई भी क्विज कोई भी दिन की मिस नहीं होगी. यू विल बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक द वीडियो आल्सो इफ यू लाइकिंग द क्विज. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. Question number 9, just waiting for more students to join. Yes, most of you have joined. That's wonderful. Start करते हैं. Question number 9. बहुत सिंपल है, लड्डू क्वेश्चन है. टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए. I'm pretty sure most of you would have marked the answer and marked correctly. Obviously, the correct answer is English, and it was handwritten and calligraphed by a person by the name Prem Bihari Narayan Raizada, and that's how it was. So it was originally drafted only in English. Okay, so the correct answer is English. Let's look at the leaderboard now. Any change? We have Shireen at number 2 now, Nitika at number 1, and I think इस बार रौनक ने गड़बड़ करी, इस रीजन से वो पीछे रह गया. Meenakshi at number 7. Shireen is, I think, catching up very fast. And 1122,977, I don't know कौन फरिश्ता है ये, पर number 3 पर है. Nitika, very good, still at number 1. Let's move on to the next question. Question number 10. Most of you have joined. Let's go. The 4 judges case का actual नाम क्या था? What was the actual name of the 4 judges case?
It was connected to the appointment of judges. इसके ऊपर एक अलग से विजडम वेडनेसडे सीरीज हम लोगों ने करी थी, एंड दैट्स देयर ऑन यूट्यूब, भूलना मत. Yes, that's wonderful. It was Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India 2015 का केस है. 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को जो था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था इस केस ने. ठीक है. So the 99th amendment was held as unconstitutional, and the NJAC, which is National Judicial Appointment Commission, was held as unconstitutional in the 4 judges case. So that is how it was. Let's look at the leaderboard now. Oops, Nitika, गड़बड़ हो गया. And Nitika, that's why is at number 5 now, and Shireen is at number 1. 1122977 मस्त नाम है. इन्होंने 1122977 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है. I'm changing the name. It should have been the actual name. So अब उसका नाम हो गया Venture. So that's the automatic name. And Hitesh is at number 3. And it's the fastest this time. So everyone, buck up. The gap between the first and the 10th one is barely what, 1100 points. So एक क्वेश्चन की देर है एंड वो गैप को कवर अप किया जा सकता है. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. वी डन विद ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द क्विज. मोस्ट ऑफ यू हैव जॉइंड. यस, चलो स्टार्ट करो. Which among the following is not a reason why India is quasi-federal? Please, 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 options को बहुत ध्यान से सुनना, पढ़ना मतलब. Which of the following is not one of the reasons why India is known as quasi-federal? ध्यान से पढ़ो. ये क्वेश्चन जिस रीजन से बनाया था इसने अपना पर्पस फुलफिल कर लिया, दैट इज कंफ्यूज करने का. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. भाई इसके चक्कर में तो क्वाजी फेडरल हुआ ना. अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया को हम प्योर फेडरल कंट्री कहते हैं. The union can legislate. Only the union can legislate on matters of residuary list. The state cannot legislate. This again means it's quasi-federal and not perfectly federal. The Indian constitution is largely a rigid constitution. इससे क्या होता है? If it's largely a rigid constitution, इसका federalism से कोई connection नहीं है. That is why C is the correct answer. Clear है? India provides only for single citizenship, unlike the US, which provides for citizenship for the country and for each of its state. So that would have been a pure federalism. So A, B और D pure federalism की बात करते हैं, but C अकेला है जो ये नहीं बता पा रहा है जिसका फेडरलिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है. That is why C is the correct answer. पल्ले बड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया. Oops. And that is why Ronak from number 7 is now at number 1. सिर्फ वो एक क्वेश्चन के चक्कर में, that is the difference or that is the havoc that just one question can create. So Ronak at number 1, Shireen now at number 2, Venture अपना 1122 वाला is number 3, and so on and so forth. आगे बढ़ते हैं. Question number 12 immediately start हो गया है. The president's rule is imposed on a state in India when what happens? Simple है यार, गड़बड़ मत करना. Yes, very good. There's a constitutional breakdown of machinery under Article 356 of the Constitution. The president's rule is imposed. आ गया. इसमें कुछ डिस्कशन का बहुत नहीं है. आई एम प्रीटी श्योर सब लोगों ने सही आंसर मार्क किया होगा, किया है, बट इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग एंड दैट इज व्हाई वेंचर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा. यस एट नंबर 4, शांतनु एट नंबर 3, हितेश एट नंबर 5, रौनक स्टिल एट नंबर 1. चल, दैट्स वंडरफुल. एंड श्रीन एट नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हैज एवरीवन जॉइंड? यस, लेट्स स्टार्ट. Last 3 seconds, it's regarding the Westminster model of government was followed by, in India is borrowed from the British form of government, जहां पर 3 अलग अलग wings होती है. That is the judiciary, the executive, and the legislature. So, 3 different wings of government is known as the Westminster form of government, which is taken from the British. It's a British form of government. So
That is why, as most of you have marked the answer, the correct answer is A. Okay. I think Isha is the new entrant in top 10. Surprisingly, काफी लोगों ने गड़बड़ करी है. And that is why Shireen again is at number 1. Shantanu at number 2. Venture भाई अपने टिके हुए number 3 पे काफी consistently, which is good. The gap is still very much, it's a gap which can easily be filled just in a couple of questions. So just keep going. Whatever your rank is, keep going. Agla question. So we have 63 students now. That's good. Question number 14. Pick the incorrect one. सामने एक 4 ऑप्शन में से एक इनकरेक्ट अपने को बताना है. Caste based reservation, Champakam Dorai Rajan, 39th Amendment, Raj Narayan, Life and Personality, Menka Gandhi, third judge's case, the DK Basu case. कौन सा है गलत वाला? Good that most of you have marked it incorrectly. शुरू के तीनों सही है, but third judge's case is not the DK Basu case. The third judge's case is a presidential reference case, which was I think of 1998 or 1999. जब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला था कि यार ये कॉलेजियम सिस्टम विच इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप लेके आए हो, तो वी डोंट जस्ट चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कॉलेजियम. और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के बोलने पर कॉलेजियम को 2 जजेस से और बढ़ा दिया था, तो CGI+2 की जगह CGI+4 हो गया था. So third judge's case is not the DK Basu case, and that is the incorrect one, and that is what we have to find out. ठीक है? Is there any change? There might be. There might be. Ronak is now at number 3. Shantanu at number 1. The gap is very less between Shantanu and Shireen, but Shantanu is at number 1. Isha has scored up pretty well and is at number 7 now. Nitika, Hitesh, Backup, Hitesh, maximum case में तो बहुत you are the fastest, but I think कोई एक दो क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया जिसके चक्कर में you are not at number 1. So keep going. Question number 13 now. Oh, sorry. Question number 15. Do we have most of the students here? It's waiting for a couple of more students. Yes. Let's start with the question. The last state where president's rule was imposed, the last state, which was the last state where the president's rule was imposed? It's more of a current affairs question. गड़बड़ कर दिया. जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होता है, वहां पे गवर्नर्स रूल होता है और बाद में जाके प्रेसिडेंट्स रूल में कन्वर्ट होता है, पर वहां पे नहीं हुआ था. द लास्ट स्टेट वाज महाराष्ट्र, जहां पर ऑफिशियली प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज हुआ था. सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए. जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, पर वो बहुत पहले हुआ था, 2018 में हुआ था. आई थिंक 18 और 17 में हुआ था, जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ था. But the last state where officially the president's rule was imposed was Maharashtra. जब last year वहां पर बीजेपी and लोकल की पार्टीज में जब कोलिशन था और वो कोलिशन ब्रेक हो गया था, शिवसेना सॉरी, और वो प्री पोल अलायंस था वो ब्रेक हो गया था, एंड दैट लेड टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल. सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. लास्ट ईयर हुआ था, एंड आई एम प्रीटी श्योर इससे काफी चेंज होगा. As usual, Ronak is the only one in top 10 to answer it correctly, and I'm pretty sure Ronak would be number 1 after this. Yes. So Ronak is at number 1, Shantanu at number 2, Shireen at number 3. Not much of a change, but I'm pretty sure कि पीछे के काफी students आगे आ गए होंगे, and now they would actually have a shot at coming in the top 10. So buck up, keep going. Half of the quiz is still remaining. ठीक है? So question number 16 now. Just waiting for a couple of more students. Yes, pretty much everyone has joined. Okay, question number 16. Start. The first state to adopt the Panchayati Raj. Pretty simple. गड़बड़ मत करना. Rajasthan. नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान 1959. बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन पे नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में द फर्स्ट पंचायत वाज हेल्ड इन राजस्थान. गुड. सब लोगों ने सही आंसर मार्क किया है. यस.
So this might not make much of a difference. Yes, it's pretty much the same. Not much of a difference. Question number 17. Waiting for a few more students to join. Start. Question number 17. Which of the following articles cannot be null during the national emergency? Articles 20 and 21. ये ज्ञान क्यों आया था? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस के चक्कर में आया था. बाय 44th अमेंडमेंट आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड. और ये कहा था कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, बट 20 एंड 21 को टच नहीं कर सकते. तो सारे फंडामेंटल राइट्स की रेमेडीज को सस्पेंड कर सकते हैं. राइट्स अपने पास रहेंगे बट वो रेमेडीज को सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21. ओके, so most of you have already got this correctly. Any change in the leaderboard because of this? Minor change, but Ronak still is leading at number 1, Shantanu at number 2, Shreen at number 3. चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 18. Most of the students have joined. Yes, start. Article 30 provides for minorities on the basis of pretty simple and straightforward. It is religion and language. Yes. So Article 30. So all minorities, whether on the basis of religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. So Article 30 minority education institutions की बात करता है. ये बड़ा फेमस केस है, the TMFI Foundation case. Don't forget. अगर नहीं पढ़ा है तो उस केस को याद से पढ़ लेना. The correct answer is religion and language. Religious and linguistic minorities की बात करता है. ठीक है? Any change in the leaderboard? Not much of a change. In fact, no change at all. चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 19, I guess. We've picked up some speed in the last 5 minutes. Yes, most of you have joined. Let's start. The National Commission for SC and ST कौन से आर्टिकल से आया है? The same article uh, which provides for a special status for the SCs and STs. It's Article 338. इससे National Commission की भी बात करी है. Let's see if there's any change here. Oops, गड़बड़ हो गई. सेकेंड एंड थर्ड दोनों ने गलती करी है, जिस रीजन से सेकेंड एंड थर्ड आई थिंक दोनों नीचे चले गए. हितेश इज एट नंबर 2 नाउ, हु इज आल्सो यूजुअली द फास्टेस्ट, बट द गैप बिटवीन रौनक एंड हितेश इज ह्यूज. सो बट यस, द गेम इज गेटिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग नाउ. रौनक बहुत आगे है, बट आई एम प्रीटी श्योर इट्स ऑल मैटर ऑफ जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. रौनक, नंबर 1 पे सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं होता, नंबर 1 पे रहना इक्वली इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो make sure that everyone is on their toes. Question number 20 now. That's pretty, yes, everyone has joined. Question number 20. Living will in which of the following cases? कौन से केस में लिविंग विल के कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा था सुप्रीम कोर्ट ने? नवतेज सिंह जौहर, कॉमन कॉज, अरुणा शानबाग, के.एस. पुट्टास्वामी. चारों प्रोमिनेंट केसेस और काफी नए केसेस हैं. It was not the Aruna Shanbag case. That's what the biggest confusion is. Aruna Shanbag case and living will की बात as such नहीं हुई थी. वहां पे it was regarding passive euthanasia, but passive euthanasia पे build करते हुए living will की बात करी थी in the common cause case. I think it was of 2018, right? So it's not Aruna Shanbag. It is the common cause case. That is again both regarding euthanasia, but living will की बात
कॉमन कॉज केस में हुई थी. Hitesh is very close to Ronak now because of this. And now probably the game has gotten even more interesting. Ronak at number one, Hitesh at number two, and Stuti at number three. Stuti is also very close to the top two. In fact, 13,000s में ही अब काफी ज्यादा लोग हैं. Just a matter of a question and number 8 वाला number 2, 3 पे कब चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, चलो, keep going. That's great. We are having a great quiz session. Has everyone come on, mentee? Yes. आगे बढ़ते हैं. Find out the incorrect one on the basis of the options given. It's regarding amendments. Seventh Amendment, reorganization, 24th Privy Purse, 92nd languages, 102nd National Commission for Backward Classes. But the correct one is 24th Amendment, Privy Purse, जो बहुत by a whisker maximum लोगों ने मार्क किया है. Because it was not 24th Amendment, it was 26th Amendment. 26th Amendment of the Constitution of India provided for abolition of Privy Purse. It was not 24th Amendment. That is why 24th Amendment is our correct answer. I'm pretty sure कि अंतर आएगा लीडर बोर्ड से. गड़बड़ हो गया. Hitesh would definitely be at number one now. And there's also और भी तख्ता पलट हुआ है. Ronak, buck up. The last few questions. Cannot afford to make any mistakes now. Meenakshi 3, Stuti 4. Again, the gap, pretty much everyone is at 13,000s now. So the gap between 1 and 9, 10 has reduced even more. That's good. Question number 22. Has everyone arrived? Yes. चलो start करते हैं. आर्टिकल 15 इनमें से किस पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है? एज इन कौन सा प्रोहिबिटेड क्राइटेरिया नहीं है? कौन सा प्रोहिबिटेड क्राइटेरिया नहीं है? It's language. Because the 5 criteria are religion, race, caste, sex, place of birth. ये 5 prohibited criteria हैं, but language is not one of them. It's religion, race, caste, sex, and place of birth. Right? So language, most of you have marked correctly. That's good. Ronak is again at number 1. टॉप 3 का बहुत सही खेल चल रहा है अभी. रौनक एट नंबर 1, हितेश एट नंबर 2, श्रीन एट नंबर 3. आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन इज परफॉर्मिंग देयर बेस्ट, बट द टॉप 3 गेम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है अभी. दैट्स ग्रेट. एवरीवन बक अप. द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस नाउ. क्वेश्चन नंबर 24, 23. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 23. The HC and HC can punish for the contempt of itself under which articles? Respectively, obviously. Supreme Court का कौन सा है? High Court का कौन सा है? Answer mark करो. Under which articles can it punish for the contempt of itself? Most of you have marked correctly, पर बाकी लोगों ने काफी लोगों ने गड़बड़ भी करी है. It's Article 129 for Supreme Court and Article 215 for High Court. Article 129 and 215 के अंदर it can punish for contempt of itself. So now we will again see Hitesh at number 1 and Shireen at number 2, Ronak at number 3. Top 3, wonderful game. In fact, pretty much everyone. We also have a new person, I think Rahul, जो for the first time top 10 में enter किया है. वेंचर फास्टेस्ट और वेंचर बहुत जल्दी टॉप 10 से, इनफैक्ट 10th रैंक 9th रैंक से 5th पे आ गया है. तो लास्ट 5 क्वेश्चंस. मेक श्योर एवरीवन इज ऑन देयर टोस. सही आंसर पता भी है तो भी टाइमिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. वो टाइमिंग का ही 50-100 पॉइंट से बहुत अंतर पड़ जाएगा, बिकॉज द गैप बिटवीन द फर्स्ट फ्यू इज वेरी लेस. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 नाउ. Is everyone here? Yes. Question number 24. Here you go.
आइडेंटिफाई वन डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स 32 एंड 226। थोड़ा सा लंबा है, बहुत आराम से। आइडेंटिफाई अ डिफरेंस, सही आंसर मार्क करना है, नॉट द इनकरेक्ट वन, यू हैव टू मार्क द करेक्ट वन। Yes, it's D, which most of you have marked correctly. In fact, as compared to other options, most of you marked correctly. 32 can be suspended during emergency, but 22, 26 cannot be suspended. शुरू के तीनों गलत हैं क्योंकि प्रोहिबिशन दोनों कोर्ट्स पास कर सकता है, सर्श्योरली भी दोनों कोर्ट्स पास कर सकता है। एंड 226 प्रोवाइड्स फॉर रेमेडीज, 32 डजंट। नहीं, 226 एंड 32 बोथ आर नोन एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। शुरू के तीनों गलत है, सिर्फ आखिरी वाला सही है। So 32 cannot be suspended during emergency. Sorry, 32 can be suspended during emergency, but not 226. That is the correct one. Leaderboard, any change? Yes, there is some change in the last seven, but the top three is still the same. Hitesh still at number one, Shireen at number two, and Ronak at number three. Chalo, question number 25 now. Question number 25. Yes, everyone has joined. आगे बढ़ते हैं. If India ever finds its way back to the freedom and democracy that were the proud hallmarks of the first 18 years as an independent nation, someone will surely erect a monument to what? न्यू यॉर्क टाइम्स ने लिखा था, वर्ल्ड फेमस कोट जो एक इंडियन 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 जज के बारे में लिखा था, दैट इज जस्टिस एच आर खन्ना, द who gave a brave dissenting opinion in the case of ADM Jabalpur versus Shifran Shukla, which in all probability that's the main reason which cost him his CGI seat in 1977 when he was superseded. It's the second judge to be, the second instance of supersession and the fourth judge to have been superseded for becoming Chief Justice of India. So the correct answer is the Justice H.R. Khanna. Any change? Yes, 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 yes. There would certainly be a change. Hitesh is again at number three, Shireen at number two, Ronak again at number one, who was also the fastest amongst the top 10. Rahul Yadav is doing very well. Number six पर आ गया है वो. धीरे से एंट्री मार के नंबर सिक्स पे आ गया है. Rahul, that's great. Isha at number four, Sudhir at number five. The last four questions, I guess now. Yes, just the last four questions. Buck up. चलो स्टार्ट करते हैं. Which one is not matched correctly? Pretty simple and straightforward. It's all going to be about timing. Yes, right against exploitation, because right against exploitation कौन सा है? Article 23 and 24, not 20, 21 and 22. Okay, so it's 23 and 24. Let's see if there's any change in the leaderboard. Oops, Hitesh वापस गलती कर दी. And now that is why Hitesh is at, अच्छा, still at number three, but the gap between three and four is reduced. Ronak, बड़ा gap हो गया है अब. Ronak at number one, Shireen at number two, Hitesh at number three. Venture back to number 10. Last three questions, four questions in fact. Last four questions. Let's start. The reorganization of Jammu and Kashmir in 2019 was through what? It was through what? गड़बड़ है. It was through passing of a parliamentary statute. That is the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था. कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था. प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जरूर पास किया था, बट दैट ऑर्डिनेंस इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस. इट्स नॉट, एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इज नॉट अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. तो सी गलत है, ए गलत है, सिर्फ बी सही है. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट. इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन एंड आई एम श्योर इससे तख्ता पलट होगा या फिर काफी चेंज आएगा. शांतनु इज द ओनली वन जिसने सही आंसर मार्क किया है. दैट इज व्हाई शांतनु फ्रॉम नंबर 9
is at number 5. Even at the fag end of the game, a lot of difference can be made just by one question. Do you understand, guys? So yes, Shantanu is at number 5. The last three questions. Is everyone here? Yes. Start. Which of the following is not matched correctly? चार ऑप्शंस में से इनकरेक्ट कौन सा है? आर्टिकल 312 पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस, 110 मनी बिल, 112 एएफसी द बजट, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. नॉट मैच्ड करेक्टली. फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 320 में दिए हैं, 312 में नहीं. आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, याद रखना. एंड दैट इज व्हाई do we have any change in the leaderboard? Oops, Isha and Rahul have marked it incorrectly. That is why Rahul is at number 9 now, Isha at number 6 now, Hitesh number 3, Shri number 2, and Ronak number 1. The last two questions, guys. Buck up. Is everyone here? Yes. Yes. चलो start करते हैं. The first Chief Justice of Supreme Court and the last Chief Justice of Federal Court of India, गलती मत करना. It's all about the timing. Quick. सब लोगों ने मार्क कर दिया है, पर टाइमिंग से थोड़ा सा खेल हो सकता है. It's Harilal J. Kania. H. J. Kania was the last Chief Justice of the Federal Court of India and the first Chief Justice of the Supreme Court of India. And because Supreme Court replaced the Federal Court of India. That is how it was. Any change in the leaderboard? Probably no. Probably no. Minor change. Last question. Let's see कि कुछ भी तख्ता पलट हो सकता है क्या? All the best everyone. एक क्वेश्चन का अगर सेकंड थर्ड ने अगर सही आंसर मार्क कर दिया और फर्स्ट ने अगर नहीं करा, सेकंड थर्ड में से कोई ना कोई फर्स्ट हो जाएगा. That is how close the top 10 are. Question number 30 of 30, the last question for the quiz. Has everyone joined? Yes. Start करते हैं. The rarest of rare doctrine बहुत सिंपल है यार. जो भी लॉ स्कूल में तुम लोग वहां पे पक्का इस केस को बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा. आईपीसी में गलती मत करना. बहुत फेमस नाम है इस केस का. Has everyone marked it correctly? Pretty much everyone has marked it correctly. That's wonderful. The answer is Bachchan Singh versus State of Punjab, जहां पे rarest of rare doctrine से और सिर्फ rarest of rare cases में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करेंगे. And what is the final leaderboard? We have it in front of us. So Ronak at who has just crossed 20,000 points is at number 1. Shireen at number 2, Hitesh at number 3, and so Ronak is the winner for today's quiz. So I hope everyone had a great quizzing experience. If you did, do like the video and do subscribe to the Judiciary Gold channel. We also have judiciary preparation batches starting pretty much every month. The next one will be starting the month of December. We also have a judiciary championship. It's a 3 test series on 3 different state ka pattern, which anyone who's preparing for judicial services should appear for that. The link is here in the description box. You can book your seat as soon as possible. Obviously, there are limited seats for that. So that will start, I think, on 22nd or 23rd of this month. And do subscribe to the Judiciary Gold Telegram channel also. The link of everything is there in the description box. I hope everyone loved and enjoyed the quiz. Do come back again tomorrow for the quiz. Tomorrow it's at 8 p.m. because it's a GK and CA quiz. And I think tomorrow day after, just check the upcoming events. So I hope it was a wonderful experience for all of you. Thank you so much. Congratulations, Ronak. The top 3 students, just send an email at accounts@legaledge.in. Singular, plural. accounts@legaledge.in along with your full name, the fact कि कौन सा competition में आप कौन से number पे आए हो, and your Aadhaar card. इसके साथ में please send it over and you'll get your Paytm cash.
once all the quizzes are over, right? So you'll definitely get your Paytm cash. Okay. Chalo. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care. Keep quizzing. Keep attending all our events, and we hope to see you guys again very soon. Thank you so much. Bye bye. Take care. Good night.